So, what are the symptoms of acute respiratory infection? Friends, the symptom you can experience will be different if it's a lower or upper respiratory infection. Symptom can include you can get a congestion in the lungs, and you can get a running nose. you can you may cough, or your sore throat can be done. Your throat can be hurt, your body may be ache, or you can get a fatigue. If it increase and all these symptoms come to you like that, a fever over 100 degrees Fahrenheit, difficulty in breathing, or you can get a dizziness, or you can get a loss of unconsciousness, so you can call the doctor. Now we will talk about what is the cause of respiratory tract infection. So how is acute respiratory infection diagnosed? In the respiratory exam, the doctor focuses on your breathing. जब respiratory exam डॉक्टर करता है तो आपकी सांस की नली पे वो फोकस करता है. They will check for fluids or inflammation in the lungs. वो चेक करता है कि fluids और कोई inflammation तो नहीं है. By listening for the abnormal sound in your lungs, bronchi, ronchi, ये सब sound आ सकती हैं उसमें. So when you breathe, the doctor may peer into your nose and ear and check your throat. So if your doctor believe the infection is in the lower respiratory tract, an X-ray of CT scan may be necessary to check the condition of the lungs. Lung function tests have been useful as a diagnostic tools, and pulmonary pulse oximeter, also known as a pulse oximeter, can check how much oxygen get into the lungs. A doctor may also take a swab from your nose or mouth, or ask you to cough up a sample of sputum. Sputum means the material. Cough up from the lungs to check for the type of virus and bacteria causing the disease. तो इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें डायग्नोज हो सकती हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी हाइजीन प्रॉपर हो, आपके हाथ धुले हों हर वक्त. जब भी आप आए कोई इन्फेक्शन डिसीज़ आपके हाथों पे ना लगी हुई हो, तो अपने हाथ बार बार धोएं. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाथ धोना और हाइजीन. आप वॉशरूम से आते हैं तो आप हाथ धोएं, बाहर से आते हैं तो हाथ धोएं. तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है. जैसे भी आप अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो अपने हाथों रुमाल, अपने कॉटन का रुमाल रखें, या फिर आप ऐसे करके छींक सकते हैं ताकि किसी और को इसकी छींक ना जाए. तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं. ट्रीटमेंट के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं तो एंटीबायोटिक भी इसमें बहुत अच्छा रोल अदा करती है. हम लोग तो सेप्टम, सेफरोक्सिम और एमॉक्सिक्लेव जैसे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, मगर आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई एंटीबायोटिक इस तरह की यूज़ नहीं करनी है. नेबुलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है. आप नेबुलाइज करें. अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो आप काल्पोल ले सकते हैं, पैरासीटामोल 500 में ले सकते हैं. और सांस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनहेलर ले सकते हैं. इनहेलर बहुत सारे मार्केट में हैं. साल्बुटामोल एक इनहेलर आता है, वो इसमें बहुत अच्छा रोल अदा करता है. बुडिसोनाइड इसमें बहुत अच्छा रोल अदा करता है. बच्चों को हो जाता है तो बुडिसोनाइड का नेबुलाइज करें, अस्थलीन का नेबुलाइज करें, और बार बार उसको साफ सफाई का ध्यान रखें. तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मौज़म रशीद. टुडे आई एम डिस्कसिंग द टॉपिक, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. सो आज मैं आपको बताऊंगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है और इसको कैसे ठीक किया जाए, इसकी सिम्टम क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले मैं आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में बताता हूँ. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन is an infection that may interfere with the normal breathing. It can affect just upper respiratory system, which start at your sinuses, ये sinuses होते हैं, and at your vocal cord or just lower respiratory system. So जो start होते हैं at your vocal cords and at your lungs.
अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से शुरू होते हैं साइनसिस से, और ये यहाँ से होते 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 ये यहाँ वोकल कोड तक आते हैं, और वोकल लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से वोकल कोड से शुरू होकर ये लंग्स तक फैलता है. सो द इन्फेक्शन इज पर्टिकुलरली डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट एंड पीपल with immune system disorder. There are several different causes of acute respiratory infection. Cause of upper respiratory infection, you can get acute pharyngitis, you can acute ear infection, you can get a common cold, and you can what is the cause of lower respiratory infection? The cause of lower respiratory infection, you can get a bronchitis, you can get a pneumonia, you can get a bronchiolitis. So what is the difference between the bronchitis and bronchiolitis? So the inflammation of the lining of bronchial tubes which carry air to end from the lungs, that is called bronchitis. And bronchiolitis means it occurs when they are swelling in the smallest airway in the lungs, called bronchiolitis, obstructing them and making it more difficult to breathe. So this is the difference of bronchitis and bronchiolitis. Bronchitis means the inflammation of the lining of the bronchial tube. Bronchial tube पे किसी वजह से वरम आ जाने को bronchitis कहते हैं, और जो छोटी ब्रोंकियो ट्यूब से जो छोटी शाखाएं निकलती हैं, जो इन्हें ब्रोंक्योल्स कहते हैं, उन पे वरम आ जाने से ब्रोंकियोलाइटिस हो जाता है, जिससे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है, चक्कर आ सकते हैं, बुखार हो सकता है. ये सब चीजें हैं ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में. तो प्रिवेंशन कैसे किया जाए एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को? सो सबसे पहले, most cause of an acute respiratory infection are not treatable. Therefore, prevention is the best method to ward off harmful respiratory infection. Getting the MMR vaccination. MMR means the measles, mumps and rubella, and pertussis vaccine will sustainably lower your risk of getting respiratory infection. So you may also benefit for the influenza vaccination and pneumonia. Talk to your doctor about getting these information. So practice your good hygiene. First of all, practice your good hygiene. Wash your hand frequently, especially after you have been in a public place, or always sneeze into the arm your shirt or in tissue. Sneeze means arm your tissue. So although this may not ease your own symptom, it will prevent you from spreading infection disease. Avoid touching your face or especially your eyes and mouth to prevent introducing germs into your system. So you should also avoid smoking and make sure you include plenty of vitamins in your diet, such as vitamin C, which help boost your immune system. Or vitamin C is maintained in the immune cell, and deficiency has been linked to highest susceptibility to infection. While research is unclear if vitamin C can prevent an acute respiratory infection, there is evidence that can shorten the length of the time and or severity of some infections. Thank you very much.